समस्या से समाधान तक विद ज्योतिष डॉक्टर निधि भान। ज्योतिष डॉक्टर निधि भान नॉर्थ अमेरिका की एक ऐसी महिला ज्योतिषी है जिन्हें टैरो कार्ड्स, रेकी, हिप्नोथेरेपी, वास्तु फेंग शुई और पास्ट लाइफ रिग्रेशन में भी महारत हासिल है। फॉर द मोस्ट एक्यूरेट, प्रोफेशनल एंड कॉन्फिडेंशियल रीडिंग्स कॉल नाउ 1-888-266-5152. Jyotish Dr. Nidhi Bhan provides all astrology related services, gemstones, mantra meditation, Reiki tarot workshops, all under one roof in her Canada based office at 2985 Drew Road, Unit 203 in Mississauga, Ontario. Toll free 1-888-266-5152 or drnidhibhan.com. नमस्कार दर्शकों, आज के कार्यक्रम समस्या से समाधान तक में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत। आज हम बात करते हैं कुछ ऐसे लोगों के बारे में जो कि कुछ ऐसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं जिनका साइंस के पास इलाज नहीं है। कुछ लोगों को साइकोसोमैटिक प्रॉब्लम्स जो रहती हैं, जैसे सोरायसिस, डायबिटीज, एक्जिमा, कुछ लोगों के बाल बहुत झड़ते हैं विच इज सोरायसिस, एंड दीज थिंग्स डू नॉट हैव अ सॉल्यूशन इन इन एलोपैथी यू कुड से और द इंग्लिश मेडिसिन्स। तो ये सब लोग कैसे ऑल्टरनेट मेडिसिन के थ्रू अपने आप को हील कर सकते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। और कुछ ऐसी लाइफ की सिचुएशंस होती हैं, कुछ ऐसे पैटर्न्स होते हैं which whatever you do not seem to leave you. You might think I keep talking about all these things, but these are all problems that a lot of you face. So this is why I try to keep talking कि जिन लोगों की लाइफ में कुछ पैटर्न्स रहते हैं, ये हेल्थ के पैटर्न्स हो सकते हैं, बिजनेस के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, जो कि एक खत्म होता है, देन अगेन यू सेट योरसेल्फ अप एंड देन अगेन आफ्टर अ फ्यू इयर्स यू आर फेसिंग द एग्जैक्ट सेम सेट ऑफ प्रॉब्लम्स। कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप के लिए ये रेपिटेटिव प्रॉब्लम्स होती है। एक शादी हुई, वो टूटी, दूसरी शादी होके फिर से प्रॉब्लम्स आई, तीसरी शादी हुई, तो हो सकता है कि जो भी आपके स्पाउस हैं वो इंडिया से उनको यहाँ पे आने के लिए इमिग्रेशन नहीं मिल पाई। बहुत से लोग पेपर वर्क के साथ स्टक रहते हैं, अगेन एज अ पैटर्न। कुछ लोगों के साथ ये पैटर्न इंडिया से चला आ रहा है, and I have seen some people over here who have put up their files, it has not worked. ये सब लोगों का जो इंडिकेशन है उनकी कुंडली से बहुत बढ़िया तरीके से मिलता है। जिन लोगों के भी द्वितीय भाव में, जो कि पितृ का भाव है, कोई भी दुष्ट प्लैनेट यदि बैठा है, बाय दुष्ट प्लैनेट आई मीन राहु, केतु, शनि, मंगल, या फिर नीच के सूर्य भी अगर यहाँ बैठे हों, तो ये एक बहुत हाई लेवल का इसको पितृदोष माना जाता है, जो कि हर काम में अड़चन देता है। जिन लोगों के जो सौम्य प्लैनेट्स हैं, जो रिलेशनशिप से रिलेटेड होते हैं, जो हमारे इमोशन से रिलेटेड होते हैं, जैसे शुक्र है, जैसे मून है, ये सब प्लैनेट्स अगर यहाँ पे बैठे हों, या फिर बुध यदि 7th हाउस में बैठे हों, या फिर 2nd हाउस में भी बैठे हों, अगेन इट कैन गिव यू प्रॉब्लम्स दैट कम फ्रॉम अ प्रीवियस लाइफ टाइम। एक ऐसी प्रॉब्लम जो यूजुअली डिस्कस नहीं की जाती है एस्ट्रोलॉजी के प्रोग्राम्स में, when a person is born say as a male or as a female but their feelings are opposites, जो वो अट्रैक्ट होते हैं वो अपने ऑपोजिट सेक्स से अट्रैक्ट नहीं होते, वो अपने ही लिंग से ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। सो अगेन दिस इज समथिंग फ्रॉम अ प्रीवियस बर्थ, स्पेशली जिन लोगों का बुध जो है वो 7th भाव में बैठा हुआ है। बुध को एस्ट्रोलॉजी में एक नपुंसक प्लैनेट माना गया है, बीच के रास्ते पे चलने वाला प्लैनेट माना गया है, ना तो मेल ना फीमेल। सो ये सब चीजें अगेन दे आर इंडिकेटेड, एंड ऑल दीज थिंग्स आर इन द सबकॉन्शियस माइंड ऑफ द पर्सन। दे मे बी ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट, उनको पता है कि सोशली कितनी प्रॉब्लम्स का सामना उन्हें करना पड़ता है, फैमिली में क्या इन सब चीजों के रिएक्शंस होते हैं, बट दे कैन नॉट हेल्प दीज थिंग्स। So how can they be helped through astrology? How can they be helped through Reiki and through their subconscious mind, which is mainly through a past life regression? So I'm mainly going to talk about past life regression relating to
the hold your subconscious mind has on you, so that you're not able to perform as you're expected to perform, as you want yourself to react to situations in life, as you want to react yourself to relationships, as you want yourself to react to, say, businesses, partnerships. ट्रस्ट के इश्यूज बहुत बार रहते हैं. कुछ लोग ट्रैवल नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनके मन में ऐसे फियर्स रहते हैं. सो समटाइम्स देयर आर फियर्स, sometimes there are overconfidence kind of situations, sometimes the expectations are so high, they are coming from a previous lifetime. So ये सब चीज़ें अगर आपको फील होती हैं, यदि आपको नज़र आती हैं अपनी लाइफ में या आपके आसपास के कुछ लोगों की लाइफ में, definitely you should be considering a past life regression. Usually people, or usually the specialists who are doing a past life regression, they have been trained, even though it is a non-regulated profession in North America. But जो हमारी association है, which is like a governing body, they do have a certain criteria, and you, whoever is doing it, they have always gone through a training process. You can look at the certification of the person who is doing it for you if you are not comfortable, and you should meet a few people before you actually decide who you want to go into this journey with. It is a journey into your past, it is your own journey. आप अपने आप को ही explore कर रहे हैं. So you need a person who will be able to hold your hand and who will be able to take you to the other side, as we call it. So ये एक बहुत ही important life की exercise होती है, and what happens and how it helps you in your life and how it helps you improve your current situation is what we are going to discuss when we meet you after the break. I'm going to tell you कि past life regression करने के क्या फायदे हैं, and this is a very commonly and a frequently asked question, that how can it help me deal with my problems in the current lifetime. So when I come back after a short break, I'm going to talk about that. समस्या से समाधान तक with Jyotish Dr. Nidhi Bhan. Life is not about problems but solutions, and Jyotish Dr. Nidhi Bhan can help you find those solutions. Jyotish Dr. Nidhi Bhan is a Toronto-based astrologer, tarot reader, Reiki master, Feng Shui Vastu expert, and past life regressor, practicing since last 18 years in North America and Bollywood. Vedic astrology and tarot cards can solve your problems. Just give me your date, time, and place of birth, and let me tell you what your problem is. जहाँ समस्या है, वहाँ समाधान भी है. Call 1-888-266-5152. Life is not about problems but solutions, and Jyotish Dr. Nidhi Bhan can help you find those solutions. Jyotish Dr. Nidhi Bhan is a Toronto-based astrologer, tarot reader, Reiki master, Feng Shui Vastu expert, and past life regressor, practicing since last 18 years in North America and Bollywood. Vedic astrology and tarot cards can solve your problems. Just give me your date, time, and place of birth, and let me tell you what your problem is. जहाँ समस्या है, वहाँ समाधान भी है. Call 1-888-266-5152. समस्या से समाधान तक with Jyotish Dr. Nidhi Bhan. Welcome back after the break to समस्या से समाधान तक. हम आज बात कर रहे हैं past life regression की, जिसको which is also called PLR. Past life regression is a very effective way of taking a person to their previous lifetimes. Sometimes there can be multiple lifetimes that a person can see within a span of say 1 to 1.5 hours. Especially जो creative लोग होते हैं, they go through many lives in one session. कुछ लोग थोड़ी मुश्किल से पास्ट लाइफ में जाते हैं, बट व्हेन दे गो देयर दे सी एवरीथिंग वेरी क्लियरली. इट इज योर ओन जर्नी, इट इज नॉट समथिंग दैट द पर्सन द हिप्नोथेरेपिस्ट इज सीइंग समथिंग एंड टेलिंग यू. आप खुद अपने प्रीवियस जन्म में जा रहे हैं. Again, some fears that people have relating to past life regression, I would like to talk about those. It is not possible that you go there and you do not come back. First of all, whoever is doing it, they have been trained in it. They can see from the eye movement, जो random eye movement, REM जिसको बोलते हैं, जो भी regressors हैं, जो psychiatrist हैं, psychologist हैं, उनको आपके आई मूवमेंट से पता है हाउ डीप यू हैव गॉन. एंड इफ यू आर इन फियर, इफ यू आर सीइंग समथिंग दैट इज मेकिंग यू स्केयर्ड, और इफ यू आर फीलिंग द पेन फिजिकली, अगेन दे आर एबल टू टेल. They will put you in the observant mode and you will be able to see the story. You will be able to be at peace, and you are in the mode where you are not feeling everything on your body physically.
easy to come out of it, because again, through the eye movement, the person who is doing it for you, they know how deep you are, how when you start coming out, and then they do something called putting your soul kind of you have gone on an astral plane, you have gone to the other side, and when you come back, they integrate your body and your soul together. And again, when you wake up, you are asked how you're feeling. Sometimes they have to reintegrate you, but they put you back together and you go home and you're feeling completely grounded. ये सब चीज़ें जो आपके लिए कर रहा है, they have to have had a certain number of hours of experience, so they know what they're doing. दूसरी चीज़ ये कि ये सब चीज़ें आपकी मदद कैसे करती हैं। जिन लोगों के लिए फियर्स हैं बहुत ज़्यादा, जो कि ट्रैवल करने में डरते हैं, कुछ लोग प्लेन में चढ़ने से डरते हैं, कुछ लोग रिलेशनशिप से डरते हैं, कुछ लोग फियर जिनको रहता है सक्सेस का, बिकॉज दे हैव बीन एट अ वेरी हाई पोजिशन इन देयर लाइव्स एंड दे हैव फेस्ड प्रॉब्लम्स, परहैप्स दे हैव बीन मर्डर्ड, परहैप्स दे हैव बीन बैकस्टैब्ड इन पोजिशन ऑफ पावर। सो ये लोग सक्सेस से फियरफुल रहते हैं, which is again very hard to relate to, but it is true. There are fears of water, there is fear of heights, which is very very common. ये सब fears, you need to live through those fears again. As you are sitting in the chair, how it helps you is you're sitting in that chair in your hypnotherapist's office, you are trying to regress, you're trying to go back, you know who you are in this current lifetime, and at the same time you want to relate to the events that happened that are giving you either those fears or those situations in your current lifetime because of which you are struggling in your current lifetime. तो जब आप दूसरे जन्म में जाते हैं, आप इस लाइफ को अपने दूसरे जन्म के पर्सपेक्टिव से देखते हैं. इट इज लाइक वॉचिंग अ मूवी or being in the current moment and living two moments simultaneously. You are actually living, your soul is present in this current moment and it is visiting and it is actually living the moment that you are going to again. Soul level पे उसको feeling होती है, and usually in all these sessions there is a lot of trauma because you are feeling everything in your soul again. You are living that life. जिस तरीके से आपके emotions, you know, if I am looking into your life, I am not able to relate to it from my soul. वो फील फिर भी आप ही कर रहे हैं. मैं आपको कुंडली से हो सकता है बता सकती हूँ कि आपके लाइफ में रिलेशनशिप को लेके दुख है, बच्चों को लेके दुख है, लेकिन जो उसका एहसास है वो केवल आप कर सकते हैं. उसी तरीके से जो अब आप पिछले जन्म में जाते हैं, यू आर सीइंग दैट पर्सन, और जो एहसास है उसको फील करना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड यू कैन ओनली फील दैट in a past life regression session, and once you feel it at the core level, it is easier to be more apologetic about it. You feel it from the core. आप सोचते हैं अरे मैंने किसी के साथ पिछले जन्म में ऐसा करा, no wonder I am suffering and I am struggling through all this in this lifetime. I am going to tell you for certain people's what happened in their past lives, just so that you are able to relate to whatever may have happened and whatever may be giving you those fears, that unhappiness. The hypnotherapist simply has to ask your subconscious mind to go to the point of entry of your problem. अगर आपको कोई इमोशनल प्रॉब्लम है, हेल्थ के कोई इश्यूज हैं, सोरायसिस है, आप शादी से डरते हैं, आप खुशी से डरते हैं, यू फील कि अगर आप खुश हो गए हैं तो somebody is going to come and snatch away your happiness. ये सब चीज़ें कुंडली में आपको पितृदोष की तरह नजर आएंगी, and most people know that they have all these things. तो इन सब चीज़ों के लिए जब आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन में जाके, यू ऑल्सो कंबाइन रेकी विद इट. अ लॉट ऑफ हिप्नोथेरेपिस्ट और एनर्जी वर्कर्स ऑल्सो. सो जब आप पिछले जन्म में हैं, आपका सबकॉन्शियस माइंड बिल्कुल उभर के ऊपर आया हुआ है. एनर्जी वर्क ऑन द सबकॉन्शियस माइंड इज रियली वेरी स्ट्रांग बिकॉज रेकी इज लिटरली the subconscious connection between your higher self and whoever you're healing. एक ब्रिज की तरह जब हम दोनों थर्ड आईज को कनेक्ट करते हैं, and we send over energy over that bridge, that is actually called a subconscious healing. So when a person is in their subconscious mind, when their subconscious mind is active, which is mostly in the sleep,
and it is when a person is hypnotized. There are two moments in your sleep when you're just going off to sleep and when you're just waking up. You will see that you sometimes when you wake up, you don't know what's going on. You're hypnotized at that point. Those are very strong hypnosis moments. These hypnosis moments are sometimes made use of people who are doing, trying to hypnotize other people, and they are not actual clinical hypnotherapists, to put across the intention. So ये सब चीज़ें बहुत important हैं सब लोगों के लिए जानना. So when you are actually hypnotized, you reach that point of entry and you travel through it. You yourself must have this intention. अगर आप fearful हैं hypnotherapy के लिए, so you will, and perhaps your spouse, your friends have done a successful session. ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके अंतरात्मा से ऐसी आवाज़ नहीं आ रही है कि आप ये कराएं, आपको डर है, then maybe you're not ready, maybe you should wait a little bit. But if you're ready, if you're eager, if you want to go and you want to find out the reason of the point of entry of your problem, you will have a very good session. You will find out the reasons, you will feel whatever experiences you had at the core level. When I come back after the short break, I'm going to tell you small little things that happened in the past life regressions of the people that I have helped with hypnotherapy, and how Reiki has been combined with hypnotherapy, how it has been able for me. I have been able to identify all these doshas, the Pitra doshas, through the birth chart, and how I have been able to put all these together to enable people to have a little better life as they go out of that hypnotherapy room. So see you after a short break. समस्या से समाधान तक with Jyotish Dr. Nidhi Bhan. Life is not about problems but solutions, and Jyotish Dr. Nidhi Bhan can help you find those solutions. Jyotish Dr. Nidhi Bhan is a Toronto-based astrologer, tarot reader, Reiki master, Feng Shui Vastu expert, and past life regressor, practicing since last 18 years in North America and Bollywood. Vedic astrology and tarot cards can solve your problems. Just give me your date, time, and place of birth, and let me tell you what your problem is. जहाँ समस्या है, वहाँ समाधान भी है. Call 1-888-266-5152. समस्या से समाधान तक with Jyotish Dr. Nidhi Bhan. So welcome back after this break on समस्या से समाधान तक. हम आज बात कर रहे हैं past life regression की, and as I promised you before the break, I'm going to relate certain things that happened in the sessions that I have been through with people. I'm going to tell you about this pattern of failure that this lady had for marriage or for relationships, you can say. उनकी already जब वो मेरे पास आई थी, she had already gone through 2 broken engagements, I believe, and 1 marriage, or 2 marriages and 1 broken engagement. So वो शादी से उनके मन में एक डर बैठा हुआ था. And she does want to get married. She did want to get married when she came to me, but she was fearful that it is still not going to work. उनके मन में ऐसा वहम था कि मैं जिससे भी शादी करूंगी वो मुझे फिर से धोखा देगा, मुझे धोखा मिलेगा, मुझसे एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा होंगी. So I don't want to get into marriage as such. But at the same time, conscious mind ऐसा कहता है that you do need a partner, I do want a family, मेरी family की मुझसे expectations हैं, तो मैं ये कैसे कर सकती हूँ? How can I get rid of this fear? How can I wash off whatever has happened to me in this current lifetime? When I talked to her, I found out in our initial session कि उनके जो भी marriages break हुई थी, it was more or less her decision to walk out of the marriage. As soon as the expectation of the other person was put across, उनको डर हो जाता था कि अरे मुझसे ये expectation है कि मैं खाना भी बनाऊं, मैं उनकी मदर को उनके मदर के साथ अच्छे से बात करूं, मैं उनको पैम्पर करूं, मैं बहुत सी गृहिणी को जो चीज़ें वी टेक फॉर ग्रांटेड कि ये करना है, ये हमारा ही काम है, उनको उन सब चीज़ों से एक फियर था दैट आई एम एक्सपेक्टेड टू डू ऑल दैट, आई डोंट वांट टू डू ऑल दैट. ये सब चीज़ें थी. उनको उनकी मैरिज, उनको ऐसा लगा कि इमिग्रेशन के लिए ही उनके साथ शादी की गई थी.
But again, when I went through the initial session, I found out that it was never the intention of the other person to leave her. उनके मन में ही पहले रिलेशनशिप टूटने के बाद ऐसा फियर हो गया था कि नहीं, इसने मेरे से शादी, इट वॉज अ प्री कंसीव्ड नोशन कि ये शादी केवल पेपर वर्क के लिए करी हुई है, की गई है. थिंग्स वर नॉट वर्किंग आउट, रैपो इतना बढ़िया नहीं बन पा रहा था. And at this point she agreed that it was because she also did not try enough. She had this notion in her head and in her mind कि नहीं, इसने शादी मुझसे केवल पेपर वर्क के लिए ही करी है. He doesn't feel anything for me and this is not going to work out. And as soon as the person got here and he suggested that over a period of time he is going to want his family to come here, that was enough to set off this energy that she had within her कि नहीं, तुमने तो मुझसे शादी सिर्फ पेपर वर्क के लिए की है, तुमको खुद यहाँ पे आना था, तुमको अपने पेरेंट्स को बुलाना है, तुमको अपनी फैमिली को यहाँ पे बुलाना है. Which is pretty normal. I don't think it is abnormal for a person who comes here, who sees the life here. उनके मन में ऐसा आना कि नहीं, मेरे को अपने पेरेंट्स के लिए, अपनी फैमिली के लिए भी अगर मेरे सबके लिए ऐसी लाइफ हो तो बहुत बढ़िया. Which again she agrees right now कि ये ऐसी कोई बड़ी चीज़ नहीं थी जो मैं नहीं उनके लिए कर सकती थी. So when she went into her past life, she saw this thing herself कि उनके पिछले जन्म में जहाँ पर शादी हुई थी वहाँ पर उनका बहुत ज़्यादा शोषण किया गया था. She was taken for granted. Her husband, she was in a royal kind of family. तो उनके हस्बैंड की शी वॉज नॉट दी ओनली वाइफ और शी वॉज नॉट दी ओनली पर्सन हुम ही लव्ड. उनके जो इंटरेस्ट थे और उनके जो इनकी जो नीड्स थी वो और सब जगह से भी पूरी होती थी. उनके पास अपनी इस वाइफ के साथ वो कभी आया करते थे, कभी महीने में एक बार आए या कभी नहीं भी आए. ही हैड अनदर वाइफ हुम ही लव्ड अ लॉट. उनको तिरस्कार की भावना इन सब चीज़ों में फील हुई. उनको जब उनकी नई शादी हुई, शी वॉज ट्रीटेड वेरी वेल. उनकी जो मदर इन लॉ थी वो भी उनको बहुत सारे गिफ्ट देती थी, बहुत ज़्यादा पैम्पर किया जाता था, बेसिकली बिकॉज द हस्बैंड वॉज इन लव विद हर at that point. And at some point he fell out of love. He got married again as was a pattern for him. तो ये चीज़ उनको बहुत ज़्यादा हर्ट कर गई. उनके दिमाग में ये चीज़ बैठ गई कि he only loved me for a short time. All these things are short term things. कोई पर्पस होता है जब कोई रिलेशनशिप फॉर्म होता है, and you are going to be thrown back after some time. ये सब चीज़ें परमानेंट नहीं होती हैं. रिलेशनशिप की जो स्थिरता होती है वो उस चीज़ का उनको एहसास नहीं मिला. इनफैक्ट पिछले जन्म से ये मैसेज दिमाग में हमेशा के लिए बैठ गया कि the other person is usually selfish, he wants something from you. ये सब चीज़ें उनके दिमाग में घर कर गई. When she passed on in that life, she did not have her near and dear ones with her. She more or less passed on her own. उनके जो बच्चे थे, उनके 2 बेटे थे who again were taken over by the king. वो वहाँ से ही उनकी सारी needs पूरी होती थी. So obviously they were very pampered. They did not care too much about the mother. तो ये सारे फियर्स लेके मदर इन लॉ की डोमिनेंस, पैसे के लिए झुकाव सबका, ये सब कॉन्सेप्ट्स वो अपने मन में लेकर उनकी डेथ हुई. जो फियर्स वो इस जन्म में भी लेके आई. शी हैड दिस प्री कंसीव्ड नोशन कि मैं जो भी कर रही हूँ उसका मेरे को अच्छा सा फल नहीं मिलने वाला है. सो आई एम नॉट गोइंग टू गिव ऑल ऑफ माई सेल्फ टू दिस मैरिज. नाउ एट दिस पॉइंट शी इज एक्चुअली वेरी हैप्पीली मैरिड. She has kids from her subsequent relationship and she is very well settled. Again, she did get married here. She did not call the person from India as before, but those fears are gone from her. So if you have such fears, and also there is a very common fear about hypnotherapy, about past life regression. It's a very very easy procedure. जो आप देखते हैं, आपका जो पास्ट लाइफ रिग्रेसर है आपके लिए आपके पीछे खड़ा रहता है हमेशा. दे नो व्हाट इज गोइंग ऑन इन योर हार्ट एंड माइंड. यू आर टॉकिंग अबाउट इट and it's not as if you can stay there. It is not possible to stay in that moment. You are very conscious of where you are. This is only about 40 to 50%. क्लिनिकल हिप्नोसिस में 40 से 50% से ज़्यादा आपको हिप्नोटाइज होने की ज़रूरत नहीं है.
सो आपको इतना ही हिप्नोटाइज किया जाता है। क्लिनिकल हिप्नोसिस को और कई चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे कि वेट लॉस के लिए, सिगरेट जो लोग बहुत ज़्यादा स्मोक करते हैं, जो लोग खाना ज़्यादा खाते हैं, अपने ऊपर उनका कंट्रोल नहीं रहता, परहैप्स ऑल दीज थिंग्स आर कमिंग फ्रॉम द प्रीवियस लाइफ टाइम, जो लोग अच्छा दिखना नहीं चाहते हैं बिकॉज दे हैव लुक्ड गुड इन अ प्रीवियस लाइफ टाइम, they don't pay attention to their looks because it has caused a problem for them. So when we come back with another session on past life regression, I'm going to talk about all those clinical things. In the meanwhile, it is goodbye from us here at Samasya Se Samadhan Tak. God bless you. Namaskar. समस्या से समाधान तक with Jyotish Dr. Nidhi Bhan. Life is not about problems but solutions, and Jyotish Dr. Nidhi Bhan can help you find those solutions. Jyotish Dr. Nidhi Bhan is a Toronto-based astrologer, tarot reader, Reiki master, Feng Shui Vastu expert, and past life regressor, practicing since last 18 years in North America and Bollywood. Vedic astrology and tarot cards can solve your problems. Just give me your date, time, and place of birth, and let me tell you what your problem is. जहाँ समस्या है, वहाँ समाधान भी है. Call 1-888-266-5152. समस्या से समाधान तक with Jyotish Dr. Nidhi Bhan. Viewers, thank you for the overwhelming response to समस्या से समाधान तक. आपके emails, आपकी चिट्ठियां, आपके phone calls, they have been amazing. They have been a very positive feedback. Now to take this further, I am coming to New Jersey, New York in December. From 24th of December up to 28th of December, I will be in New Jersey, USA. Between these days, I will be conducting a tarot workshop for 5 days, which is a very good career. If you want to get into something that is a little alternate, you should consider a career, even if you want to do this part-time, or you want to learn how to read the tarot even for yourself. This is a very good opportunity. Come to our 5-day workshop. And then also on the same days, I will be conducting a Reiki workshop. The Reiki workshop is for levels 1 and 2. Basically for healing the mind, healing the physical body, and healing the spirit, healing the experiences that you have. So this is a healing workshop. Also it goes very well with the tarot, but you could take the Reiki workshops separately. And also I am here for people in New Jersey to have a face-to-face personal reading. You have of course sent us all these overwhelming responses and requests for Skype, FaceTime readings and phone call readings, which we have been doing. But if you want to see me personally, I am in New York between 24th of December up to the 28th of December. So for the tarot 5-day workshop, for the Reiki level 1 and 2 5-day workshop, and for readings, astrology and tarot cards, please do call us at all these numbers to book your place for all these. See you there. समस्या से समाधान तक with Jyotish Dr. Nidhi Bhan. Jyotish Dr. Nidhi Bhan is a Toronto-based astrologer, tarot reader, Reiki master, Feng Shui Vastu expert, and past life regressor, practicing since last 18 years in North America and Bollywood. Vedic astrology and tarot cards can solve your problems. Just give me your date, time, and place of birth, and let me tell you what your problem is. जहाँ समस्या है, वहाँ समाधान भी है. Call 1-888-266-5152. Life is not about problems but solutions, and Jyotish Dr. Nidhi Bhan can help you find those solutions. Jyotish Dr. Nidhi Bhan is a Toronto-based astrologer, tarot reader, Reiki master, Feng Shui Vastu expert, and past life regressor, practicing since last 18 years in North America and Bollywood. Vedic astrology and tarot cards can solve your problems. Just give me your date, time, and place of birth, and let me tell you what your problem is. जहाँ समस्या है, वहाँ समाधान भी है. Call 1-888-266-5152.